Morning children. So today we are going to start chapter number 19, standard 5th EVS 1, that is constituent of food. Constituent of food means whatever the nutritions which is present in our food and important for our growth, that is called as the constituent of food. As we all know that each and every food is not healthy for our health. To make our body and mind healthy, we need a proper diet. So the nutritions which we get from the food are called as the constituent. Very first is carbohydrate. In carbohydrate, the first we are going to study about the starch. Starch turn blackish blue when it comes in a contact with the iodine. Iodine is a solution. Whenever the starch come in a contact with the iodine, it turns into the blackish color. So we can infer that there is a starch in the potato. Sago, sweet potato also contain the starch. So these are the food material which contain the starch. Cereals like jawar, bajra, wheat, rice contain a lot of starch. We can obtain the flour from these grains. These are the grains and we obtain them from them a flour. These grains from our staple diet. We get the energy from the starch food. Our body uses this energy for the different kind of a work. This energy also keeps the body suitably warm. So from the starch we obtain a body energy, and this energy is required to make our body warm and healthy. Next constituent is nothing but a sugar. Everybody is familiar with the sugar. Whatever the food materials which gives us a sweet taste is called as a sugar. Sugar food. Foodstuffs that taste sweet contain a different kinds of a sugar. There are the different types of sugar. For example, we can obtain the jaggery and the table sugar from the sugar cane because a contain a sugar called sucrose. Sucrose is a type of a sugar from which we can get the jaggery. Jaggery means good. सबको पता है ना गुड़ खाते हो ना, that is nothing but the jaggery. It obtained from the sugar called sucrose. Ripe fruits like a mango, banana, chico, as also honey and the milk also contain the various kinds of a sugar. They too give us a energy. So sugar also provide us a energy. So sugar is also one kind of a constituent. Next is fiber. When the grain like jawar, wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not all alike. When the flour is siphoned, we find the large particle left behind on the sieve. These particles are fine pieces of the skin in a bran of a grain. Bran is a fibrous substances. In the process of the digestion, fiber has a special function. Fibrous substances help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed. The undigested food is of no use to the body. Fiber helps to form a stool from this. Undigested food fiber is also called as the roughage. Now, fiber is also very important for our body growth. Without fiber our body cannot grow, and for the digestion purpose also a fiber is very important. Fruit and the vegetables, especially their skins, whole grain and the pulses are all the source of the fiber in the food. And our food does not contain enough fiber, it can lead to the constipation. अगर हमारे फूड में फाइबर नहीं होगा, इट कैन लीड अस टू द कॉन्स्टिपेशन. अप टू नाउ वी हैव लर्न अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड. अप टू नाउ व्हाट वी हैव लर्न दैट स्टार्च, शुगर एंड फाइबर. स्टार्च एंड शुगर एंड फाइबर कलेक्टिवली व्हेन प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट. अगर हमारे फूड में स्टार्च, शुगर एंड फाइबर 3 ऑफ देम्स आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड इज नथिंग बट अ फैट. Oil is a fatty substance, right? Everybody is familiar with the oil. Oil is a fatty substances. Paper becomes a translucent when the fatty substances is applied to it. Paper become translucent is a sign of the presence of the fat in the foodstuff. Very simple example, just go in the market and buy a samosa from the market. That shopkeeper will give you a samosa in a paper, and after you came in the home and open that paper, you can see that oil is present in on the paper. Fat is in our body also provide energy to our body. What is the function of fat? The same like a carbohydrate, to provide a energy. They give twice as much as energy as the carbohydrate. Fat is also give us the energy. We include a smaller quantity of this constituent in our diet. Cream, butter, ghee, oil are the example of fat. Nut, meat, egg yolk also contain a fat. The fat we eat gets stored in our body. If the food is not available for the some time, the body can get energy from the stored fat. अगर हम लोग काफ़ी टाइम तक खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी को कौन प्रोवाइड करता है? सेम फैट. देयर इज अ लेयर ऑफ द फैट अंडर आवर स्किन. इट गिव्स अ शेप टू द बॉडी एंड द लाइक
a blanket also prevent the loss of heat from the body. So it prevent the loss of heat and from our body and give shape to our body. So हमारे body का जो भी shape होता है, it is due to the presence of fat in under our skin. Now after carbohydrate and fat, the third important constituent is protein, right? Just as a stone and the brick are the building blocks needed for a wall, protein are also building block of our body. So why protein is important? So protein is also called as a body building. The body, whatever our body is from top to bottom, it is because of the protein. The body undergo wear and the tear continuously. Sometimes it get injured, but the healing and the repair of our body goes on all the time without our being aware of it. Protein are the necessary for that purpose. Proteins are required in the plenty during the growing years of our person's life. चाहे अभी देखो, जो भी आपकी हाइट होगी, जो भी आपका वेट होगा, जो भी आपका हेयर लेंथ ऑफ हेयर, लेंथ ऑफ नेल्स, अगर आपको कहीं पे चोट लगती है तो आपकी जो बॉडी रिपेयर होती है ऑटोमेटिकली, जो आपकी चोट ठीक हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी. ऑल द different dal, pulses, groundnuts, milk and the milk product like yogurt, khoya, paneer, eggs, meat and the fish are the rich sources of the protein. To get the required protein of our daily diet should include the dal, pulses as well as milk product. अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है और आपको डेली प्रोटीन आपकी बॉडी में चाहिए, यू विल रिक्वायर्ड अ ग्राउंड, यू हैव टू eat all the dal and all the milk products. Our body required the carbohydrate, fat, protein in a large proportion. These food constituents are called as the macronutrition. अभी देखो, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन हमारी बॉडी को मेजर क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, हमें इन्हें ज़्यादा खाना होता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोन्यूट्रिशन. रिमेंबर द वर्ड मैक्रोन्यूट्रिशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द विटामिन एंड मिनरल्स विच इज़ कॉल्ड एज द माइक्रोन्यूट्रिशन. मतलब क्या? ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोन्यूट्रिशन. In addition to the macronutrition, we need a certain food constituent in a very small quantity. These are called as the micronutrition. For example, vitamin and mineral. The different vitamins are the named using the letter of the alphabet A, B, C, D, E and K are the most important vitamins. Although we need the vitamins in a very small quantity, a lack of deficiency of any vitamin result in a serious disorder. For example, the deficiency of vitamin A over a long period result in the night blindness, and the deficiency of vitamin D result in the weak and the brittle bones. देखो, विटामिन हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, राइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विटामिन हमें मेजर क्वांटिटी में नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं. बट स्टिल अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी विटामिन हमारी बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड नहीं होते हैं तो हमें काफ़ी सारी डिसीजेस का सामना करना पड़ता है. अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको आँखों की रोशनी चली जाएगी. अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बोन्स वीक हो जाएगी. सो विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए बट स्टिल play a very important role. Next is mineral. Iron, calcium. देखो, मिनरल में क्या पढ़ रहे हैं हम? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल दैट आर इसेंशियल फॉर द बॉडी. दे आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन ऑल द फंक्शंस. हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फंक्शंस आर देयर, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द minerals. So minerals are very important. For example, iron is necessary for carrying oxygen to the different part of the body. If there is a deficiency of iron in the blood does not get enough supply for the oxygen and the one feels constantly weak and tired. This is called as the anemia. देखो, अगर आपकी बॉडी में इनफ क्वांटिटी में आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, आयरन इज अ टाइप ऑफ अ मिनरल. if in your body the sufficient quantity of iron if is not present, देन यू विल फील एनीमिया. एनीमिया मतलब आप थके हो जाओगे, आप वीक हो जाओगे, आपको कंटिन्यूसली थकान होगी. सो जितने भी फ्रूट्स, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल है, स्प्राउटेड पल्सेस मतलब हुसल एंड मूंग दाल होती है ना, their skins and their brands of the cereal and the pulses, all of them are contain vitamins and mineral. That's why we have to eat as much as fruits and vegetable as we can. A balanced diet. Now what is the meaning of balanced diet? Balanced diet topic is a very simple, children. Balanced diet means the
सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या, हमारे खाने में प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन, ये पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट जब प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, द टाइम द डाइट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी खाना खाओ, आप अपने खाने में सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड करो। आप सीरियल खाओ, व्हीट खाओ, आप चपाती खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, फ्रूट लो, दूध पियो, एग्स लो, आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में सारे डाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। now the last topic is the nutrition and the malnutrition, nourishment। देखो, अगर हमारी नरिशमेंट एंड द माल न्यूट्रिशन इज द वेरी सिंपल टॉपिक, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नरिशमेंट का मतलब होता है हमारी बॉडी को सारी क्वांटिटी में अगर विटामिन एंड द मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मिलता है, हमारी बॉडी प्रॉपर हेल्दी होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो देन हम कुपोषित हो जाते हैं, राइट। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप क्या हो जाओगे,